touched and changed because of his pyar for the Sikh community. And so it's really exciting to have him come and speak to us about what really is at the very core of what unites us all together. So please give him your undivided attention for the next hour-ish or so, and then we'll have lunch. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Again, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sangeeta said 2 miles. I am very little below. I come here to learn. Then मैं बच्चों को लोग संगीता, हरलीन, Mandeep, बहुत कुछ सीखा है सब करके. I am here to learn, and I am very glad that they gave me this job so I could read and study more about it. The topic is right there. Amrit Vela, as Sangeeta has mentioned, one of the basic requirement of a state. And as she said, it's important to touch the basics sometimes. I know this talk is not going to be as academic as the previous talk was, with a lot of great input by Simranjeet Singh. Mine is nothing to add. This is all what Guru said. I'm just going to like a tabdi, but Guru da tabdi nothing much I can say. So for this workshop, what I decided was there are countless shabads of Guruji's and historians at that time about Amrit Vela. I picked up 4 shabads, and the 5th shabad is a fifth group is going to get a combination of 3 slokas. So I would like you to make 5 groups so we can first, you all can read. The way it's going to be that I'll give you each group 1 shabad. You spend about 15-20 minutes. Take one senior guy or somebody who really understands Gurbani maybe more than you all to sit down and do the translation. And then each group can have a leader and come and present the meaning of the shabad they are given. And then I will comment on them later on. And that's how we'll end in the end and see what we learn. We can start with either Farani from the translation of shabad. Is everybody ready? 3 lines and you got 3 minutes. Yes, if you remember time you would Okay, here's the shabad that we had. So the Guru Sikh who has the blessing. Okay, I'll just start reading. The first line is Sacha Sahib Sach Nae Pakhya Pal Apad. The translation that we came up with for that was Waheguru is the true master, his justice is true, and he speaks to us with endless love. Line is Aakhe Mange Deve Dat Kare Data. We ask the master over and over, we ask him for things, and he gives these to us because that's the kind of master that he is. And this is posed as a question. So what do we present to our master? What do we give to him in his court so that we can get a vision of his court and we can be in his good graces? What do we speak with our mouths which, upon hearing what we're saying, that he will love us? Amrit Vela Sach Nao Badiai Vichar. This is the answer for the 2 questions above. It's that during Amrit Vela, we
remember his true name, and we reflect on his greatness and his good qualities. Karmi aave kapda nadri mokh dwar. Through good deeds we get a human body, and only through salvation. Nanak says this is how we know that Waheguru is the truth. Waheguru Ji ka Khalsa. Thank you. How does it go? Table number 2? 1 minute. That's Gurmukh Gadi Rajan. Gursikh Palki or Karm Amrit Vede Sojnavanda. Gursikh, he wakes up early in the morning and he does his Amrit Vela and he does his Ishnan and he gets ready for the next thing. Gur ke bachan uchar ke dharam saal di surt karanda. So he recites the Gurbani and while he meditates on Waheguru and goes towards the Gurdwara. Saad Sangat vich jai ke Gurbani de free sunanda and he joins the Saad Sangat and listens to the Gurbani. Sanka mano mitai ke Gur Sikhan di sev karanda. So doing all these things clears all his doubts and all the negativity from his mind and he serves the Sikhs of Guru. Kirit virit kar dharam di leh pasad aan vartanda. And by doing the righteous deeds and work, he receives his earnings and then he shares it with everyone. Gursikha no dekh kar pichho bachya aap khavanda. So he gives and he shares with everyone, and then whatever is remaining or what is left over, then he thinks about himself. So like Virji on our table, he brought a very good point that it's one shakna, not shak ke vandana. So Gursikha no dekh kar pichho bachya aap kali kaal pargas kar gur chela chela gursanda. In this dark age, Kalyug, he illuminates himself with such faith, and the difference between him and Guru reduces, and he's at the same level where Gur Chela, Chela Gur Sanda, the difference becomes very less. Gurmukh Gadi Rahu Chalanda. And when doing all these things, he has a very clear mind, clear sense, and then he doesn't wander around, and he has a very clear path to follow. Waheguru Ji ka Khalsa. Next year. The first line is Gursatpur ka jo Sikh pathaye so palke ut har naam te aave. If you call the Guru's Sikh arising before the sun to recite God's name is your duty. Udam kare palke par bati isnan kare amrit sar naame. Effort should be done to cleanse the mind early in the morning by reciting Naam. In this case, Amrit Sar is not like Amrit Sar, it's not like a surrogate. Amrit Sar means Naam, like doing Paak. Upadesh Guru har har jap jape, sab kilvik paap dok le jape. Upadesh is guidance, and kilvik, paap, and dok. These paap are sins, dok is sorrow, and kilvik is like kam, krodh, dok, like other vices. So, with the Guru's guidance, by taking his name, sorrow, suffering, sins can go away from us. Fifth Chade Divas Gurbani Gave Bede Urtveya Har Naam Pyave. Then, with the rising day, the Sikh should take God's name with every breath she or he takes while doing your daily activities. Jo saans ke raaste aaye mera har har so Gursikh Guru mat paave.
She or he who takes and remembers rightly with every breath comes closer to God. Jismo dayal hove mera swami, tis ko sikh guru upes sunave. She or he who will receive God's blessing by becoming merciful will receive the Guru's guidance. जब नानक दूर मांगे तिसको सिद्धि जो आप जपे अपना नाम जपावे. Nanak seeks the dust from the feet of the humble disciples of those who recite God's name and incite others to recite as well. Table number 4. So I think this shows from Gurdas. Every line starts with Kurbani Tinda Gursikha, which means that by Gurdas Ji is a sacrifice to those Gursikhs who so the first line, Kurbani Tinda Gursikha, Pichil Rati Utbande. So we talked about what Pichil Rati means, and rather than being too specific, we said that it means like the end part of the night or the end part of that. So Sar is shortened for Sarovar, which could be a metaphor for Sangat, or also Nam. And so we said this is like washing your mind as opposed to like washing your body with Nam or meaning with Sangat. Gurbani Tina Gur Sikha Hoy Ekman Gur Jab Japande. So Ekman da matlab hai like to be so focused, right? So you're making an effort to go meet that. It's not just like so get to it, and that's basically. Meaning of that they do on those gurus, which could be any day actually, they do bhakti with that. Then Gur Seva Phal Sufal Philande. So the fruit that you get from doing Guru Seva, you get even more fruit. Sufal Philande. Thank you. Number 5. Number 5. So it's 3 different slows. Chalange or Nam Jap Nisvasadat. So if you wake up at Amrit Vela and you rise early in the morning, and you say Nam, then day and night, then all your pain and suffering will not affect you, and your delusions will be eradicated. Kara, Sajid, Nam, Yape, Nanak, Minte, God, so your pain will be eradicated. Parvate from Nam Jap Karke Janan Dhyaye, Janan Maran Mal Upre Sanjay Ki Gunkai. So the first part is saying, in the early hours you meditate on the name of the Lord and meditate on the feet of the Lord, and all of that dirt or mad from your life and death will go away when you sing praises
Thank you, all of you. At least you have made an attempt to understand. Now I'll go briefly first to work on the punchlines of each show, because I don't want to spend all the time detailing the shows again. That was me. Look like it. The star was. First we started the Shabbat, which you all know, Japji said, Pauri number 4. And I just kind of highlighted the key lines of the Shabbat. The key lines are, Ved ke rakhiye jind se darbar, moh pe boliye jism to le. The question and the answer in the Veda. As I was discussing with my group, for us to understand the concept of Shabbat, the whole body brings up that why do like a king? And when we go to king's place to gain favors, we have to offer, as you all offer to any kings or bosses or anything we go to, gifts. And Guruji took it, this is a worldly example, this everybody knows it, that's everybody does it. He starts with that, because that's an easy thing for us to understand. What can we offer to our King Almighty? What should we say? In old days, the kings always said, Jahane Alam, Panahe Alam, this and that, and all those things, oh, you are the savior of the whole world and everything. What do we say to Vaiguruji? And we can't give much because it's all given by you. Because you always want to give king something unique. The Guruji says, what can I give him unique is this, right here. Amrita Vela Satyanam, early hours of the morning, the electrons gave this. So first lesson from Guru Nanak Dev Ji, what should we be doing in the Amrit Vela, early morning hours of the day. Now next Shabbat comes from next fourth Guru, Guru Ram Das Ji. In this Shabbat, the punchline and the most important line is the first line. Guru Satguru ka jo Sikh khaye, so pal ke ut naam te aave. ऊपर से जमीन नहीं हम on the lower part. Last line. It's a completely other. What do you think? Just read it. Just read it. It's the PowerPoint. Yeah, it's not going to show. Right? Not going to show. This is can you move the page? Oh. So let's run. So important thing I wanted to remember, so that we all should remember, and we can think about this in our mind every day. क्योंकि ऐसे सारे कहने हैं ऐसे सीखा, कुछ हमें पूछा, what are you? I am a Sikh. And here is what Guruji said, Guru Ram Das Ji tells us in no uncertain terms. There's no wavering here. There's no question, may be or may not be. No uncertain terms. That Guru says, first time is wake up early in the morning and reflect on God. And this is the line we started this bookshop, because last year I pointed out this, that we should repeat this Shabbat every morning to remind us, are we Sikhs? Are we not Sikhs? Simple. तो Guru Ram Das Ji ने कोई confusion चाहिए. Clear cut that, so we should really do the Shabbat every day to remind us, and I do it too. I don't want to tell you that, I don't want to text myself. I text myself. The day I wake up late, I curse myself. I'm not a Sikh for today. I'm not a Sikh for today. I should be. I'm not following Guruji's definition. So this is what
got started. Now, from Guru Ram Das Ji, I went to the current historians of that time. This is by Guru Das Ji, who showed us what the Sikhs, how they were practicing what we talked about in the last workshop. What Guruji's saying was how they were practicing. The important line is the last line. Gurmukh Gadi Rah Chalanda. Bhai Guru Das Ji told us, by practicing what Bhai Guru Das Ji shared the previous show, by practicing Guruji's teachings, which is Amrit Vele, जिस पीछे बच्चे ने किया तो उसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट करवाना सार नाम होता सार जब दूसरे बच्चे ने किया सरोवर है सरोवर जहाँ जितने भी स्नान करती जगह हो सकती है पहला सवेरे स्नान करके फिर गुरु के वचन उच्चार के नित्य में अपना करके फिर गुरुद्वारे जाते पर एंड लाइन दे दिया ना which is such an important line that this is the way to have an easy life. ओपन हाईवे, वॉकिंग ओपन हाईवे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसी ने एक्सीडेंट नहीं कर देना, कोई तो रुपए नहीं होनी, ये तरीका जब गुरु दे रिश्ते दे चल के सारे उन्हें दसे हैं नाम जपना, कीर्त करना, अमृत वेले उठना, and he told us that they were practicing that at that time. Again, I took a shovel from Bhai Guru Das Ji, and this is his last war. So I'm telling all about Sikhi in his 40 wars, the 40 wars of Guru Das Ji ne, and now look at that. How much importance he is giving to the Sikh way. And he uses the word Qurbani, then I'm going to Sikh each one of them. That means, as the youth did that translation, that he wants to sacrifice himself, that he honors those people who follow Guruji's message. And message, as you see all the lines, Amrit Vele Sarna Manda, Ikmani Jab Jab Kanda, Nikren Kanda, Amrit Vele Urda, Sasavit Janda, Gurmani Ganda. And then last line is another punch line, Gur Seva Fal Sufal Ande. Guru di Seva. Kiya Guru di Seva? Anybody wants to offer? Guruji de पैर को ढूंढने, लता को ढूंढिया, गोडे को ढूंढने, गुरुजी ने कोई सब्जी ला के देनी, रोटी ला के देनी, की सेवा कर दी? गुरुजी ने टीचिंग करना, live like what Guruji said. Guruji ने आगे प्रसाद की मिला ऐसे हर एक काम कोई फल मांगते कभी मां पे ऐसे क्या सुन की फल सुन की लंदे ये उसनो तुसी पूरा कंप्लीट एडवांटेज लाइफ दा फल सुफल होता है पंजाबी जगह जरूर भी आंधी है उन्होंने पता है कि सस्सा ला जाए तो बड़ा चंगा हो जाता है सुफल वो फल दा सुफल बनाता वो फलंदे भी वो फल जब कभी तरह चंगी तरह वो फल खुल गया उसका पूरा फैला हो गया गुरु की सेवा के नाल ते उन्हां सिखाते वो कुर्बान जाते going on to the
फिफ्थ ग्रुप ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ I'm ending with this again Guru ji ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ in ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਰਡ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਮ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਬਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਾਤ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਮ ਰੱਖੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਐਂਡ ਇਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸੇਵਨ ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਨਿਸਵਾਸਰਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਣੀ ਨਿਸਵਾਸਰਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਨ ਕਿਸੇ ਖਾਰਾ तुझे ना भी आप नो वरीज एंड देन मैं थोड़ा ऊपर दा डिफरेंस मीनिंग थोड़े को कीता है नेचुरल डिजास्टर जे नेचुरल डिजास्टर ने केड़े नेचुरल डिजास्टर है काम रोगों का these are natural they are there everywhere all the time and that disasters I use the word disaster क्योंकि वो सानू disaster वांगू तबाह कर देते हैं that's why I use the word disasters those disasters को उसी बचना है ते उन्होंने prescription दी थानू again गुरु जी ने शब्द प्रभाते प्रभ नाम जप गुरु के चरण पे आए गुरु जी टीचिंग रिफ्लेक्ट करने मॉर्निंग जन्म मरण माल पुत्र है माल कहते हैं dirt ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੌਗਸ ਵੀ ਆਰ ਗ੍ਰੀਡੀ when we were happy we were calming you know I mean all the dirt we have collected in our genetic impressions what we have they can go away ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ next ਲੋਗ ਜਿਹੜਾ if shift ਵਕਤ ਫਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I want to go a little more detail 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲੜ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ I want to share that with you ਉਸਤਾਦ ਕਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵਨ ਦੜਿਓ ਹੋਏ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਲਿਵਿੰਗ ਡੈਡ ਵਰਲਡਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਡੈਡ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਹਾਂ ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ morally ਅਸੀਂ dead ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਾਈ ਜਾਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਝੱਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੈਕਸਟ 10 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵੱਡਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਅੱਲਾਹ ਸੇਤੀ ਰਤਨਾ ਇਹ ਸੱਚਾਵਾ ਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼
वन थिंग अबाउट जीवन में मोह का की मतलब है कि वाहिगुरु जिस तरह सानू सारा पता बेमोहताज कि वो किसी को डिपेंडेंट थोड़ी है वो कहते हैं पहली क्वालिटी दी ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸਜਾਵਾ ਸਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਸਜਾਵਾ दूसरा एडवांटेज है साथी राती अमृत उठ के नाम सुनने का दूसरा एडवांटेज ये है प्रीदा दुख सुख एक कर दिल पे लाए कार अल्लाह भावे सो भला तां लगी दरबार ये अमृत वेले नाम जपण दे नाल सानू दुख ते सुख इक्को जिहे मिलणगे ये दूसरा एडवांटेज जेड़ा जीवन दे मोहां तो बचण वास्ते माया माया अटैचमेंट तो हम कहते हैं कि दुनिया जिन्होंने दिल दुनियावी कर लेने दुनियावी कोई काम नहीं कर सॉल्व करनी ते जिन्होंने फकीरां दी कॉपी की गुरुआं दी मैसेज को फॉलो किया वो असली पूरे काम आए ना कि उन्होंने फिर ये दुनिया दी अटैचमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਸੇ ਆਇਆ तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵਰਜਨ पहले तेरे फुलड़ा फल पी बच्चा रात जो जग लहन से साई करनोदा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे वास्ते पहला पैर रात दा है अर्ली रात ते फुलड़ा होता है फुल फ्लावर ते फ्लावर तो बाद बनता है फल फल तां बनेगा जब पहला फ्लावर की उसी सांभ करांगे जे फ्लावर ही तबाह हो गया ते फल तो कोई नहीं बनना ते फ्लावर है पहली रात जे राती असीं टीवी देखते रहे ते कौन सिर उठ पाएंगे नहीं ये काम नहीं बन सकता जे राती असीं काम मोटे करते रहांगे ते सवेरे उठ के नाम जप लांगे ना ये काम होना ही नहीं वो फल तो बनना सामना का फुल नु है सो नॉट ओनली फॉर यू ऑल मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राती टाइम से सो राती सोने का पाठ करके ठीक तरह समझ के पढ़ो राती ठीक तरह वाहिगुरु करके सो ते ता से हो सकते हो ता ਤੁਹਾਡਾ फल मिलेगा ते फिर वो कहते जो जगन लहन से साईं कनौदा सो इस करके मेरे वास्ते भी है सारे वास्ते है कि राती नु सामना जब फर्स्ट पैदा रात नु तुसी सांभ लांगे ठीक ना हां जी ते फरीद जी दा शब्द है फरीद जी ए भी कहंदे दी रात एक थोड़ी बनदी है दाती बनदी रात एक थोड़ी बनदी है सत्यां मिले ना पाओ जनाने नु दराव दे ते ना मिलन को आओ फरीद जी जाग के ते जिदा नाम जपन नु कहंदे पैन राइट सो साउंड दा है भी गुरबाणी च दिन रात नाम जपन दा है सो saying भी राती इन्ने बजे सोओ तो फिर सवेरे जल्दी उठो is outside of what he is trying to say is just Prida Guru Pariji कहने तू आप ही 10,000 मुड़ के उचित इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है खड़े हो सेठ के
रात फरीदा रात कतूरी मंडी है सुतियां मिलन ना पाओ जिन्ना नींद रात दे तिन्ना मिलन खवाओ. So Freed is actually saying to stay up during the night and jump on now. Freed in that slope is not saying stay up all night. That's not physically possible. He's talking about only in the morning. But it's the raat. I know, but it is. उसी ना अगले से slope ना attach करने का नहीं. You can in this Gurbani this got a very important that you have to go over front and back of the whole shubha. Okay, let's understand this and then we can study more about that. पर रात हो गई अमृत वेला है. अमृत वेला है कि जे राती जागण गए राती हम नहीं कहा कि सारा जागते रहो कि दिन भी जागो राती जागते रहो. जे नाम सिमरन जरूर है ठीक है पर मैं I will hold on to that. We'll go on that later on. But let's finish this. Okay. फिर उन्होंने क्या जो जगन कोई गल हो जो जागन लाइन से जेडे जाग के नाम सिमरन करनगे सवेरे उठ के ओ वाहिगुरू नाम जपणगे उन्हां नूं वाहिगुरू दात देगा उन्हां दा वाहिगुरू खुश होएगा. फिर गुरु नानक पातशाह श्लोक में नाम गया करता है डिस्कस कि मदे तुहाडी वाली गल ना आ जाए. गुरु जी ने कहा गुरु नानक पातशाह श्लोक दाती साहिब संधियां and they are chronological. तुसीं नोट करो एक दूसरे को they are coming one after another to continue. दाती साहिब संधियां आंसर टू योर क्वेश्चन क्या चल रहा है तिस नाल एक जगंदे नाल हन एक ना सुत्यां दे. वो कह रहे हैं कि खाली ये ना सोचो don't take the only one aspect of the शब्द कि रात जना रात कतूरी मंडी है सुतियां मिलन पाओ. वो कह रहे समझो नाम जपने नाल वाहिगुरू दे नाल साडा रोग नहीं है कि मैं उठ गया सवेरे या मैं सारी रात जाग मैं रहन सबाई बैठा रहा तो मैनूं वाहिगुरू मिल जाएगा ना. दाती साहिब संधियां क्या चलना ये सब कंट्रोल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਲੇਮ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਿਆ. ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ. ਸੋ ਇਨ ਸਮਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ. गुरु ने सानू एक गाड़ी राह दसता कि वाहिगुरू का नाम अमृत वेले उठ के जपना पर फिर भी नहीं समझना कि मैं किया कि उदी बख्शिश के नाल वाहिगुरू सानू मिलेगा उदी कृपा के नाल सानू उठना मिलेगा उदी कृपा के नाल सानू नाम जपना मिलेगा उदी कृपा के नज़र के नाल मौजूद होएगा. असी ये नहीं क्लेम कर सकते कि असी ये किया असी सारी रात जागते रहे हैं. ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਪੇਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਤੇ whatever little I know otherwise Kudevi ji can further expand on this. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Just a few quick things. Oh, sorry. I forgot. I was given an assignment. 10 मिनट 5 मिनट ये कि नित्य ने उन्होंने उठते हैं चेता है कोई दाई होते हैं उन्होंने भूल गई तो मैं ना गया वार्ड में उन्होंने वेला भूल गई. 5 minutes 5 seconds. I'll do quickly about the नित्य. मैं quickly go to this. Should take more than 5 minutes. Sandeep. I know, but I tried that. See, I'll go quickly. So, summary again I put down here. Remember the Amrit Vela, very important. Sleep on time. No fixed time for Amrit Vela. Because a lot of youth might have questions. I used to have this question. Amrit Vela है कि usually कहने 2-3 घंटे पहले पर important है discipline. As quickly कि हम नित्य की बाणियाँ तो पता है आज तस्वीर तेरे से कीतियाँ ने अकाडमी को पंथ ग्रह पर ज़्यादा नित्य की हिस्ट्री की है क्योंकि तो सारे आर्टिकल भेजा सीगा नित्य का पढ़न का तो उसका बीबी का क्वेश्चन ये सी कि गुरु महाराज ने सानू कहना है क्या नित्य करने वास्ते नित्य की हिस्ट्री है कि ट्रेडिशन स्टार्टेड एट गुरु नानक देव जी टाइम
भाई गुरदास जी ने 12 विचार उन्होंने सपोर्ट है कि एक पाठशाला से करतारपुर जो कम्युनिटी बनी बच्चों गल की पिछले वर्कशॉप लगा जपजी साहब सोदर पापी सोयरा was started there by Gurudhan Dev this time. Japji Sahib, Sodar, Sopur, Sola Sahib are great at Manis. They are given special space in Guru Granth Sahib first 13 pages. And during Guru Gobind Singh this time, Guru Gobind Singh's Banis were added. Where and when, nobody at least know exactly, but they think probably Ponta Sahib, where Guru Granth Sahib, Guru Gobind Singh Ji was at a peaceful time, जिथे उन्होंने जाप साहब का अकाल का उच्चारण किया है, उतो शुरू हुई ने, but again always controversies are there. There is something Rathnamas, if we review, which were the written by the contemporary sects of that time, what sects used to do nickname, there are different Banis mentioned. So the Panth finally got together and produced a Ratna Maryada, what we have, the Banis we already do. So why do we do nickname? There was another question in the paper you all got. That we reflect on our level of Gurmat awareness. Where do we stand? Number 2, we need daily reminder so that we keep us on the right track. Why we need right track? Because our life is difficult. And we need it every day. Because every day we can, whatever we do today, tomorrow day, job problems, company problems, company problems, respond to we need to do the Nitrin. And the body which affects me most, which I always remember, I just want to share with you all my personal experience. The body, Japji Sahib, Munda Santok, Sarampai Chaudhary, Dhyan Pere Guru, ये मनु बॉडी बहुत हिट कर दी है कि सानू मनु जिस वेले मैं जाके अपने और दे जिला दर्शन औखा होना सुनना नहीं सब मुंडा संतो शर्म के तुझे मेहनत भी करनी है हार्डवर्क भी करना है ध्यान की करे भूत ते वाहिगुरू का नाम ही याद करना है ते खिंता का हमेशा विचार करना मैं मर जाना भाई एवं किसी नाल तड़ा झगड़ा ना करा कुआरी का आया जुग मेरी लाइफ जुग तेरी में किसी नाल सब को डिटेल हुआ ते लास्ट पार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डंडा पर मनु जो तुरमा से डंडा चाहिए यार ओ वाहिगुरू जी स्पोर्ट हर गल पे I don't know how many you know I'm a surgeon सर्दी दे मनु मैं डंडा वाहिगुरू का वाहिगुरू तेरा डंडा मेरा इन्ने मनु काम कराना है ये डंडा मेरा हर जगह पे तेरा है so again that's just a personal experience why we do this is a daily grind why is daily grind because we don't do it for faith. Faith is important. We can spend another bookshop on faith, Manjeet mentioned, but again, that's the problem. And the love. If we have love for Gurbani, faith for Gurbani, we will not feel as grind. We do too fast, pat, खिंच दो, 15 मिनट खिंच दो, काम बुलाना है. राम ना करिए, we understand the message. नहीं understand करेंगे, फिर there is a grind. ठीक है, to begin with, we don't understand. Nobody does. I still don't. But keep the concentration in your hand. हर वक्त जड़ी लाइन पे नहीं समझ लगी, उस वक्त खोल के देखो, की मिलेगा. एक लाइन पे पांच करने वास्ते जैसे enjoy करना है, बितरे में learn करना है, बितरे पासों ये दा advantages follow करने में, तब keep that in mind. It's not कि 10 मिनट जैसे पढ़ मुगा था, 5 मिनट पढ़ मुगा था. Sure, you can do it. You can do quickly. But no फायदा zero. Maybe जरा पता तिल का मान पड़े हो जाए, but that's all. एक तुक ते एक लाइन ते समझ के जाप सरेगा. एक लाइन गुरुमाई ने 5 लाएंगे उन्हें, ताकि उस अट के समझो. A jab, a lab, a bad, a bad. ऐसा meaning समझो. A jab की meaning. अल्लाह का की नहीं, अपैरा की नहीं, वायुदेव की तो आई है. जब ब्रह्मदा जला पैबे बूझू ना सका गंज 5 लाख का काल जा ले पे नाम का सारे पर मोदी को जाने ना बेट इस पॉइंट खत्म हो गई पॉइंट खत्म हो गई तानु पल्ले टका नहीं ना पल्ले गया
ना तो होता कर दिया, then it's a grind, no doubt about that. Then it's a grind. थोड़ा पाठ करो, ज़्यादा ना करो, बस उधर फिर तालु grind नहीं लगा, then you will enjoy. ते बस मैं हर एक understand serious जो भी है, हाँ जी बस. And how to do नितने मसले जैसा है. Come on, well, peaceful time. Cut back it, calm, reflect करके do it slowly, loud enough, every important part. उच्ची बोल के करो, मुंह दे नहीं करना, नहीं करना, पाठ करना है, चंगा करना है, आगे हुए चलो जी काम खत्म हो गया, ये काम का आकार से, ये ताली दी, उच्ची बोल के करो, अच्छा है, कान भी सुने, मुंह जो में निकले, मीनिंग में आवे दिमाग, फिर तुम लोग फैला हो गया. The preferably sitting in a quiet room, stop to concentrate, तो उसे सारे नाम गप्पा मारते हो, तो मेरे daily routine नहीं कि तो हम जितने ना हुए, ताकि हम चित्तड़ पावे, आज यार मेरा रास्ता पार लग गया, ऐ feeling आवे, तो कहाँ स्वाद है, तो जैसे बैठ समय, तुरंत फिर देख लो, कोई गल नहीं, तो टाइम बहुत हो गया, माफ करना, गलतियाँ नहीं आपको लांच करनी, क्षमा, बाय.